morning, my dear student. So let's start with your transpiration pull. How actually this tension or transpiration pull develops in plant. In this video, we are going to understand. Okay. So far, we people have understood your transpiration, types of transpiration, stomatal transpiration, cuticular transpiration, lenticular transpiration. Yes, we people have understood this. What is transpiration? Once again, it is nothing but loss of water in form of vapor, which mainly occurs through stomata. We people have discussed structure of stomata, right? It is having guard cell, correct? Stomatal pore and subsidiary cell together forms your stomatal apparatus, and this stomata is present on leaves. Say your dicot leaf, your dorsiventral leaf, your monocot leaf, isobilateral leaf, जहाँ पे number of stomata on upper and lower epidermis are same, whereas in case of your dicot leaf, dorsiventral leaf, the number of stomata is more in lower epidermis in comparison to upper epidermis. We have understood factors affecting transpiration, that are our light, temperature, humidity, wind speed, number of stomata that opens, water status, canopy structure, and many more factors that affects transpiration. Okay. Once again, you should know the forces which is responsible for lifting water up to height of 130 meters or over that, right? The forces are cohesion, adhesion and surface tension. We have understood what is cohesion between water molecules, what is adhesion, water molecule and wall of xylem. Surface tension, you very well know that. You people have understood this well in your chemistry, yes or no? Yes. So now let's get started with how exactly this tension or transpiration pull develops. So dear student, in anatomy we have understood your dicot leaf, है ना? This is the transverse section of your dicot leaf. You very well know, labeling आप सबको अच्छे से पता है. This is called as your cuticle. This is called as your, what it is said? It is said as your upper epidermis. This is said as your, yes, palisade mesophyll cell or palisade parenchyma. Yes or no? Yes. This is called as your spongy parenchyma, right? This is your lower epidermis, ठीक है ना? And once again, this is your cuticle and this is your stomata. ये क्या है आपका? Stomata है. Am I clear? As you can see, the number of stomata is more in comparison to upper epidermis. Upper epidermis में नहीं, मैंने यहाँ पे कोई stomata नहीं दिखाया. Okay, it is there, but मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया. To represent that number of stomata is more in lower epidermis. Okay. Now, if I am talking about your transpiration, तो यहाँ पे water कौन से फॉर्म में होता है? वेपर के फॉर्म में होता है. Yes or no? Yes. So dear students, ये जो है, can you say this? This is called as your intercellular space. आपको अच्छे से पता है. What is intercellular space? These are the space which is present between cells. Yes or no? Yes. तो देखो, ये जो intercellular space है, the red dots represents your water molecule. ये water है, ठीक है? तो जो intercellular space है, so here I am writing this way, the intercellular space. What is intercellular space? You very well know that the space which is present between cell. This intercellular space are saturated. They are saturated by water vapor. आई बात समझ? नहीं आई. मैंने ये बोला कि ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. कैन यू सी दिस? यस और नो? दिस रेड कलर डॉट्स represents water
vapor, and this water vapor is present in your intercellular space. Am I clear? अब भाई क्वेश्चन ये बनता है कि ये वेपर आया कहां से, है ना? क्वेश्चन क्या बनेगा, ये वेपर कहां से आया? यस, दिस वेपर कम्स फ्रॉम, ये जो वेपर है, ठीक है ना, इट कम्स फ्रॉम wet wall of mesophil. Wet wall of mesophil. Are you people getting my point? तो ये जो mesophil है, mesophil सेल के पानी होता है, लिक्विड वाटर, जब ये लीव्स के ऊपर लाइट गिरती है, राइट, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, वंस लाइट फॉल्स ऑन लीफ, जो लिक्विड वाटर प्रेजेंट होता है मीजोफिल में, इट स्टार्ट्स टू evaporate, which results in formation of water vapor, and this water vapor comes in intercellular space. आई बात समझ? मैंने आपको क्या बोला, यस और नो? वापस से एक बार, ये जो मीजोफिल सेल है, इसमें कौन सा होता है, लिक्विड वाटर. क्या है बच्चों? लिक्विड वाटर है. When light falls on this mesophil cell, when light falls on this mesophil cell, जो लिक्विड वाटर होता है वो वेपराइज होता है, इट फॉर्म्स vapors, yes or no? And this vapors comes in the intercellular space. Simple as that, easy to understand, right? तो ये mesophil cell है, and what I am drawing, these are the water molecules. As you can see, water molecules present in the mesophil cell. उसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरने की वजह से ये जो वाटर है मीजोफिल सेल में, ठीक है, वो इवोपरेट हुआ, जो वेपर बनी वो कहां पे आई, इंटरसेल्युलर स्पेस में आई, एज यू कैन सी ओवर हियर. नाउ लुक वेरी केयरफुली, ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस है ना, these intercellular spaces are connected to outside by means of stomata. दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, फोकस ऑन दिस पोर्शन ओनली. ये इंटरसेल्युलर स्पेस देखो, इट इज कनेक्टेड टू आउटसाइड बाय मीन्स ऑफ स्टोमेटा. यस और नो? यस. एंड भाई देखो, जो एटमॉस्फियर है, ये एटमॉस्फियर है, ठीक है ना, एटमॉस्फियर में जो वाटर वेपर होता है उसका प्रोपोर्शन कैसा है, लो है. वेरेस यहां पे जो वेपर का प्रोपोर्शन है वो कैसा है, हाई. नाउ यू नो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, diffusion from higher region to lower region, which results in, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेपर है, वेपर जो बनी, राइट, it comes out as you can see over here, by means of stomata, as you can see. अच्छे से समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? मीजोफिल सेल, लाइट गिरी, लिक्विड वाटर वेपराइज होके इंटरसेल्युलर स्पेस में आया. इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर कनेक्टेड टू आउटसाइड बाय मींस ऑफ स्टोमेटा. फोकस. यस, यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ही कम होता है एटमॉस्फेयर में, आपको पता है. नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर में वेपर का प्रपोर्शन कम, अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस में वेपर का प्रपोर्शन ज्यादा. डिफ्यूजन हाई टू लो बाय मीन्स ऑफ स्टोमेटा. ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? यस. नाउ डियर स्टूडेंट, चलो फोकस. यहां से वेपर सारी बाहर निकली. आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? ये वेपर सारी बाहर निकली फ्रॉम दिस मीजोफिल सेल, राइट.
more and more water gets evaporated. हाँ या ना? I am just explaining by taking one example. More and more water evaporated. As you can see, more and more water is moving out. Are you getting my point? तो देखो, यहां से पानी ऐसे बाहर जा रहा है, तो ये जो मीजोफिल सेल है, कॉपी पेस्ट, ओके, ये जो मीजोफिल सेल है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा होगा? लो, अब इसका एडजेसेंट देखो, एडजेसेंट, कॉपी पेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा होगा? हाई। नाउ यू नो, क्या पता है आपको? व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे पानी ज्यादा आ गया एट द वेरी सेम टाइम। अब ये कैसा हो गया? लो। देखो, इसके एडजेसेंट में क्या है? ये सेल है, कॉपी पेस्ट। इसका पोटेंशियल कैसा है? हाई। इसका कैसा है? लो। वाटर विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे कैसा हो गया बच्चों? लो हो गया। चलो देखो, ये सेल कॉपी पेस्ट, इसका वाटर पोटेंशियल कैसा है? हाई है, यहाँ पे लो है। वाटर ये चला इस तरफ, अब यहाँ पे कैसा हो गया? लो। फिर ये देखो, दिस कॉपी पेस्ट, इसका वाटर पोटेंशियल कैसा है? हाई। ये चला पानी ओवर हियर, यहाँ का क्या हो गया? लो। एंड फाइनली दिस क्रिएट्स टेंशन। ये क्या क्रिएट करता है बेटा? टेंशन। कहाँ पे? दिस रेड कलर पोर्शन इज योर जाइलम, इज योर जाइलम। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? देखो, यहां से पानी निकला बाहर वेपर फॉर्म में, ये वेपर चला बाहर, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम, एडजेसेंट सेल का ज्यादा, वाटर गोज दिस डायरेक्शन, फिर दिस, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फाइनली this creates tension in wall of your xylem, trachary element of your xylem. This creates tension, and this tension is due to transpiration, and hence it is called as a transpiration pull. क्या कहा जाता है? Transpiration pull. Do you know that? Tension of one atmosphere only. Tension of one atmosphere can lift water up to 10 meters. Can lift water up to 10 meters. Are you getting my point? Yes or no? Yes. So if there is tension of near to about 10 to 20 meters, right? Then this is very much sufficient to lift water in tall plants. Are you getting my point? Yes or no? Yes. Okay. चलो वापस से एक बार, ये नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या बोले मैडम? तो ये डायग्राम आपको समझ में आया? लेट्स लेबल इट। दिस इज योर जाइलम एंड दिस इज योर फ्लोएम। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। वेपर कम्स फ्रॉम वेट वॉल ऑफ मीजोफिल। यस और नो? यस। जिसकी वजह से जो मीजोफिल सेल है, जिसकी वजह से जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेस टू बाय 30 बार्स। इट डिक्रीजेस टू बाय 30 बार्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। अब ये मीजोफिल सेल क्या करेगा? दिस मीजोफिल सेल टेक्स water from deeper cell. Yes or no? Why it is possible to take water from deeper cell? Since water molecules are connected. Since water molecules are connected by hydrogen bond. They are connected by hydrogen bond. Are you people getting my point? मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको? Yes or no? Yes. And finally there is tension. There develops tension in trachary element. In
trachea element of xylem, and this tension is created due to transpiration, and so it is called as your transpiration pull. आई बात समझ मैंने क्या बोला? Yes or no? Yes, right? So due to this tension, water is pulled passively like a rope from soil, from roots to tip of plants, ठीक है? आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है. ओके, मैंने आपको क्या बोला? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर टेंशन, देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेंशन ऑफ 1 एटमॉस्फेयर कैन लिफ्ट वाटर अप टू 100 meters. So I can say up to 10 to 20 atmosphere can lift water over plant with height of 130 meters. Am I clear? This tension, this pull overcome even your gravitational pull. It overcomes your gravitational pull. Am I clear? So my dear student, this is your transpiration pull. I hope आपको समझ में आया. सिंपल सी बात है, वेपर यहां से गया, मेसोफिल सेल लूजेस वाटर, वेपर यहां आया. अब ये सेल का वाटर पोटेंशियल कम हुआ, तो इसने पानी कहां से लिया? फ्रॉम एडजेसेंट सेल. इसने कहां से लिया? फ्रॉम एडजेसेंट सेल. From adjacent cell, finally it creates tension in trachea element of xylem. समझ में आई बात आप सबको? So ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेकियरी एलिमेंट है. There are millions of trachea elements which together creates this tension, which forms this pull, and this is what I mean by ट्रांसपीरेशन पुल. ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया. राइट, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम, चलो ये जो है वो आपका क्या है? जाइलम. दिस इज योर रूट सेल, राइट, एंड कैन यू सी दिस? दिस इज योर जाइलम एलिमेंट. ये क्या है बच्चों? दिस इज योर जाइलम एलिमेंट. एज यू कैन सी, ये क्या है? This is your xylem element. Yes or no? And here I am drawing your. This is your what? This is your palisade, parenchyma. This is your epidermis. Okay. This is your. What is this? This is your spongy parenchyma. This is your lower epidermis, which is having stomata. मान लीजिए ये क्या है? बोल्ड पोर्शन is your stomata. So if I am talking about water, तो ये सॉइल का पार्ट है, राइट? पानी ये रूट से ऐसे चला, दिस इज योर जाइलम, ऐसे 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 फ्रॉम हियर टू मेसोफिल सेल, राइट? evaporates water comes out. Am I clear? So here water is absorbed passively and it moves up like a rope. As you can see over here, ऊपर से कोई खींचता है ना, वैसे ही like a rope. Am I clear? चलो, I hope you understood this video really very well. So this is mechanism of your transpiration pull. Thank you.